Yes, let us start with question number 16. Left hand side is tan theta upon 1 plus tan square theta plus cot theta upon 1 plus cot square theta. We have to prove sin theta into cos theta. So we will start from the left hand side. Tan theta upon, we know that 1 plus tan square theta is equal to secant square theta whole square plus cot theta upon 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. यहाँ पे whole square आ जाएगा. Now we can convert into simple ratios. Sin theta upon cos theta whole upon secant square theta is 1 upon cos square theta whole square plus cot is cos theta upon sin theta whole upon 1 upon sin square theta whole square. So here we can write sin theta upon cos theta into, this can go up, cos square theta whole square और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा प्लस cos theta upon sin theta into sin square theta whole square upon 1. So now here you can see we can cut it. First of all we will square it, sin theta into cos 4 theta upon cos theta plus cos theta upon sin theta into sin 4 theta upon 1. Can be, you can write or not, नीचे 1 डिनोमिनेटर में, it's your wish. यहाँ पे रह गया sin theta into cos क्यूब थीटा, बिकॉज यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स माइनस होगी, 4 minus 1 is 3. cos theta upon again यहाँ पे sin क्यूब थीटा. We can take sin theta cos theta common, क्योंकि इसमें भी sin theta है, cos theta दोनों में है. So we can take sin theta into cos theta as common factor. So यहाँ पे sin already common लिया हुआ है, तो cos क्यूब में से एक cos बाहर है तो अंदर आ जाएगा cos square theta. यहाँ पे cos common है, sin में से sin क्यूब में से sin square theta यहाँ पे आ गया. और we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So sin theta cos theta into 1. So here sin theta cos theta is equal to right hand side. Hence proved.